In this video, we will learn about the difference between socialization and the orientation. Usually, we assume like socialization is the same thing, whatever is the orientation. But it isn't so. We will learn today the difference between both of the terms. Let's talk about the socialization and the orientation. Socialization is something derived from social. That means people are involved in this process, or it might be something that is relevant to the people interactions, maybe interpersonal interaction, maybe introduction with different peoples. And the second one is orientation. Orientation shows like this is an introduction of something, and what is that something we will learn today in this video. When we talk about socialization, then it means it is an introduction of newly hired employee to the existing employees, authorities, colleagues, and subordinates, as well as concerned authorities. That means it is the introduction of newly hired person with the individuals who already are working inside the organization. That might be possible that those employees are the authorities of employee who is newly hired, or might be the colleagues, might be his subordinates. So whoever is playing different responsibilities inside the organization will be introduced in the process of socialization to the newly hired employee, so that he will be well aware of कि उसके जो एम्प्लॉयज ने रिपोर्टिंग किसको करनी है, who will be the immediate boss of the एम्प्लॉय, और किसके इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो कर रहा होगा, कोलीग्स उसके कौन से होंगे, उसके सबऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, और कौन से प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलरली उसको कौन से कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा प्रॉपर सुपरविजन के लिए. इफ द पर्सन इज हैविंग सम प्रॉब्लम, तो उसके लिए हु विल बी द कंसर्न्ड अथॉरिटी. अगर उसको रिसोर्सेज चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट हिज टास्क, तो उसके लिए ही मस्ट बी एबल टू नो कि उसकी कंसर्न्ड अथॉरिटी कौन सी है. तो सोशलाइजेशन बेसिकली इज ऑल अबाउट दिस थिंग, टू इंट्रोड्यूस न्यूली हायर्ड पर्सन विद द एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उसको पता हो कि मैंने किस पर्पस के लिए कौन से इंडिविजुअल को कांटेक्ट करना है. Then there is orientation. Orientation is the introduction of the same individual who is newly hired in the organization with the organization and the job for which the person is hired. When we talk about the introduction of organization, so it is important to learn about the vision, mission, objectives, policies, do's and don'ts of the organization, code of conduct, how to behave while someone is working inside the organization, and what are the different rules and regulations if someone is working inside the organization. ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, या हम कह सकते हैं कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, कैसे बातचीत करनी है, वो सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में न्यूली एम्प्लॉय को बताए जाएंगे अदर देन द इंडिविजुअल्स. तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द ऑर्गेनाइजेशनल ओरिएंटेशन. Then there is another type of orientation, that is job orientation. अब जिस पर्पस के लिए, जिस जॉब के लिए समवन इज बीइंग हायर्ड, उसकी जॉब ड्यूटीज क्या है, व्हाट विल बी द सेट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हैज़ टू अकम्प्लिश. फिर उस परफॉर्मेंस को जो है किस तरीके से इवेलुएट किया जाएगा, या वी कैन से व्हाट आर द डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने न्यूली हायर्ड एम्प्लॉय से रखती है इन द फॉर्म ऑफ हिज जॉब ड्यूटीज. उसकी परफॉर्मेंस लेवल क्या होगी, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली एक्सपेक्ट फ्रॉम द न्यूली हायर्ड पर्सन. फिर ही मस्ट बी एबल टू नो दैट व्हाट आर द डिफरेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. ऐसा ना हो कि जो लीस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ जॉब्स हैं वो उनके ऊपर फोकस करता रहे, और जो ओरिजिनल ड्यूटीज़ हैं जिनके लिए उसकी परफॉर्मेंस को असेस किया जा रहा होगा, जिसके लिए मेनली ऑर्गेनाइजेशन ने उसको हायर किया है, वो उनके ऊपर प्रॉपर फोकस ना कर पाए.
इसलिए अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ समवंस जॉब कि उसने करना क्या है, उससे ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, एंड व्हाट विल बी द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इन ऑर्डर टू assess his performance. Then we need to know about different benefits of socialization and the orientation. The very first benefit of socialization is that employee will know about the organization. जब उसको रूल्स पॉलिसीज पता होंगी, ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स पता होंगे, देन द पर्सन विल बी एबल टू सेट हिज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स। उसको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करने जा रही है, वट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, तो उसके लिए हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल अकम्पलिशमेंट। देन ही विल बी डेफिनेटली नो अबाउट हाउ टू बिहेव, कोड ऑफ कंडक्ट, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशंस और अनवांटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट एक स्मूथ जो वर्किंग है वो जारी रहे, और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स की बेस पे जो ओरिजिनल गोल्स हैं, जिन सेट ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए समवन इज बीइंग हायर्ड, उनके ऊपर कंप्रोमाइज किया जा रहा हो, या किसी और के साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर अगर किया जा रहा होगा, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन हर एक को उसकी रिस्पेक्ट के अंदर रखते हुए चाहती है कि वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग करे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीवमेंट में कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिव। देन द पर्सन विल बी, whoever is hired as a new employee, he will be aware of concerned authorities कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए किसके पास जाना पड़ेगा। Then obviously he will be comfortable when he will be knowing about the persons concerned authorities, क्या है बॉस, क्या है रिपोर्टिंग किसको करनी है, कौन आपकी परफॉर्मेंस को सुपरवाइज कर रहा होगा, को किसकी डायरेक्शंस को आपने फॉलो करना है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट अबाउट हाउ टू बिहेव एज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप उस सेट पैटर्न में खुद को फिट इन कर सकें, एंड व्हेन you will be able to fit in that particular framework, so it will be easier for you to be accepted inside the organization and will be focused on your assigned job जिसके लिए आपको हायर किया गया है। So I hope you are well aware of the socialization and the orientation and how both of the terms are different from one another.